So we are starting our class today, and so far we have covered up how to install the PyCharm IDE for the Python. We discussed that the basic syntax about how to collect the data from the user, how to create a variable, how to assign the variable for a particular task, what is the input, process, output. In the last class, we have started a topic about the conditional statement. We discussed that how we are going to apply the conditional statement in our program. Today we are going to discuss about multi-conditionals logics. Anyhow, we already applied in the last class about the multi-conditional statements, and I told you that we will going to continue in the next class about how to utilize and, or, not, and also we are going to discuss nested condition in this particular class. So those who are not aware about the nested, the students who are not aware about the nested, so in computer programming, when we talk about the nested loop or nested condition, it means that condition within a condition. Like first you have to pass through from the first gate, then you have to do the something for the second gate. Like loop inside loop, one cycle inside the cycle, one condition within another condition is known as nested condition. In easiest way or easiest word, we can say combined statements, or maybe second statement is based on the first one. So we are not going to use the elif, we are going to use if and if. So it's mean the first condition and then second condition, not applying the same condition or same rules on a first one. Okay? So in today's class, we are going to discuss about lecture 5 we have today. And we are going to discuss multi-conditions. Multi-conditions logic. Okay, so we are going to discuss this thing in today's class. The first part, objective of today's class. What are the objectives? We are going to discuss and understand need. Understand the need for multiple conditions. Second is we are going to learn logical operators. Which means and, or, not. Then the third objective for today's class, we have to apply multi-condition logics in real world experience. Last, which we are going to do is, we are going to implement both take it now back. So I was saying that we have to discuss about what we are going to do today in our class, the objective, understanding the need for multiple conditions, why we need it, learn logical operators, how we are going to apply, then we are going to do some practical task about the same code, and implement both. We have to discuss about like a both combined and nested one. So today, maybe some code is going to be more logical and technical, because now we are learning one by one, step by step. So now we are in the 5th class. So I am expecting from you all that you are aware of and how to do and how to type all the operators in a computer system. Like कि आपने input कैसे लेना है, output कैसे होगा, process कैसे चलेगा, उस process को जो है वो फिर हम result में कैसे convert करेंगे. So जैसे जैसे चीजें बढ़ती जा रही हैं, I hope कि आप वो सारी practice कर रहे हो
क्योंकि आप अपना टाइम दे रहे हो, चीजें लेके चल रहे हो, तो प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है. 1 or 2 students sending me the data, whatever the task I have given to you all. तो जैसे टाइम मिलता है आप टाइम देना, क्योंकि हमारी फिर कल एक क्लास है, फिर वीकेंड है, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्लास होगी. तो डू द प्रैक्टिस. सी अगेन, प्रोग्रामिंग नीड टाइम. कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद उस कॉन्सेप्ट को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर के ऊपर प्रैक्टिकली करना बहुत जरूरी है. जो टास्क मैंने आपको दिए हैं वो करने जरूरी है, और जो आप डेली बेसिस के ऊपर अपने लॉजिकल चीजों को लेके चलते हो, आप चाहो तो आप उसको भी कन्वर्ट करवा सकते हो इस पर्टिकुलर लॉजिक के अंदर. ठीक है. सो नाउ सेकेंड पार्ट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. व्हाई डू वी need multi conditions. Because as per the programming, we have a multiple okay, so we have a multiple things. I think today's internet is giving trouble. So if my voice is going to be lag or something has happened, just text me on my WhatsApp number or give a missed call. So then I get to know that okay, the devices are, or you are facing some difficulty. Okay. So continue. Okay, why do we need multi-conditional logics? In real life, decisions are rarely based on a single decision. That I am going to explain to you. Okay, whatever we are doing on a daily basis, it is not based on a single condition. We are facing a multiple condition on a daily basis. Just take the example. First, electricity will be there. Then internet should work properly. Then the devices should be charged. So multiple condition to take online classes. So same thing for the physical. You have to be reached to the organization. Then you have to be attended in the class. You should have a proper system with you. Okay? So on daily basis, we have to follow this type of things in our life. Examples I can say, more example which I can say, include in that explanation. In Python, to evaluate multiple condition, we use logical operators. As I mentioned, what is mean by the logical operators? And, or, not. Like, you can drive if you are 18 and have a license with you. Same thing, if you wanted to do advanced Python, number one, you should know how to use the computer system and have completed Python basics. So two conditions should be true. Second one, you can attend class if you have paid fees or have a scholarship. So see, if you have paid a fees or a scholarship, two different objectives, but with the help of or. So I'm going to write on this screen, then you get to know that okay, what is the meaning of that. So if you are 18 and have a license, okay? So this is important that when you are 18 and then have a license, then you are allowed to drive. Second one which says if you have paid fees or have a scholarship.
So see, or and it means true should be true both sides, and one side should be true and false, doesn't matter true and false, both areas. Okay, so whenever we talk about conditional, multi-conditional, so in Python, to evaluate multi-condition, we use logical operators. And how we are going to bifurcate and explain the difference between operators and conditions. That when you are 18 and then have a license, then you are allowed to drive. Second one which says, if you have paid fees or have a scholarship. So see, or and it means true should be true both sides, and one side should be true and false, doesn't matter true and false, both areas. Okay, so whenever we talk about conditional, multi-conditional, so in Python, to evaluate multi-condition, we use logical operators. And how we are going to bifurcate and explain the difference between operators and conditions. Okay, I have created a one operator form for you. So in that you can see the operator on the left hand side with the I mentioned in the red color. Meaning, what is the meaning of that operator? I wrote it in the blue color, and the black one is about how that condition works. So whenever again I am repeating, and means both conditions should be true, like this, okay, both sides should be having a true condition. Whenever we talk about or, so at least one side should be true. Like see, this one is true, this one is not true, but anyhow it's going to be work. So maybe sometimes the student get confused, because sir, first one should be true or the second one. Doesn't matter. If the first one is false or the second one is true, so the answer always be true. Okay, it doesn't matter if the first condition is getting true or the second condition is getting true. In the both scenario, the final result will be true for you. Not means reverse. Mostly ways we say the vice versa. So not true. So whenever we talk about not true, like for example, if I mention not true or in bracket, so whatever we have in a bracket, it's going to be false. Okay? So this is going to be understandable when we do the practical task. Okay, now I'm moving forward for the next part, which is our practical one. So I hope you all having a proper computer system with you. If you do not have a computer system, again I'm repeating, write it down the code in your notepad or take the screenshot by using your mobile phones if you do not have a computer right now. But do not miss the things. Anyhow, I always share the recording as well. But see, for your record purpose, for your own notes, you should know all the things what we are doing in the classes. Okay? Okay. So the first thing which we are going to create with the example of AND. Okay? How the AND is going to be used in our programming code. Same thing. I am preparing a same logic or same example like, okay, if you are eligible to drive or not. So I am going to write the code for the this particular objective. Let's see the programming how it's use the AND. ठीक है, सबसे पहले हमने बनाया एज जो हमारे वेरिएबल है. हमने एज के ऊपर यूजर से डेटा कलेक्ट कर लिया कि आप अपनी एज बतानी है. तो हमने एज इंटीजर में हमेशा से रहेगी, कभी भी वो वर्टिकल के अंदर नहीं आएगी, सॉरी फ्लड में नहीं आएगी. तो इंटरनल इनपुट हम अपनी कमांड लिख रहे हैं इनपुट की, और इनपुट के बाद आपका प्रॉम्प्ट एंटर योर एज. ठीक है, फर्स्ट पार्ट. नाउ द सेकंड पार्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइसेंस ऑप्शन, कि डू दे हैव अ लाइसेंस और नॉट. सो वेरी सिंपल, इफ द स्टूडेंट हैविंग अ लाइसेंस और नॉट, वी हैव टू क्रिएट वन फ्लैग. हम यहाँ पर बात करते हैं जब हम कंडीशन में लॉजिकल स्टेटमेंट्स के अंदर यहाँ पे बात करें तो हम फ्लैग बनाते हैं, मीन्स के पहले से वैल्यू उसके अंदर गिवन हो, ताकि वो वैल्यूज अगर हमारे पास हैं तो उस वैल्यूज को हम वहां से ले सकते हैं. ठीक है, तो लाइक फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे बनाया कि हैव और हैज लाइसेंस. ठीक है, हमने हैज लाइसेंस के अंदर कर दी वैल्यू हमारी ट्रू. ठीक है, जैसे हमने बताया था कि हमने पहले से क्या सेव कर दिया, वर्ड यहाँ पे ट्रू सेव कर दिया.
अब देखो हमने यहाँ पे ट्रू सेव किया क्योंकि ट्रू का कलर चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने वैल्यूज पहले से क्या बता दी कि ट्रू है। अब हम अपना कंडीशन लिखेंगे एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 and whatever the variable we mention here has license, because इस लाइसेंस के अंदर हमने पहले से वैल्यू बताई हुई है। हम चाहे तो यूजर से भी वैल्यू ले सकते हैं और नहीं चाहे तो हम यहाँ पे पहले से ही बता सकते हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अभी सिर्फ मैंने आपको समझाना है कि दोनों वैल्यू कैसे यूज होंगी, एंड कैसे यूज होगा और कैसे यूज होगा, फिर उसके बाद हम मजीद ऑब्जेक्टिव पे जाएंगे और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो अब हमारे पास आ गया, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट करो? यू कैन ड्राइव, ठीक है। हमने यहाँ पे अपना लॉजिक बना ली। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई सिंटैक्स या लॉजिकल एरर तो नहीं आया। रन, फिर एंटर योर एज। आई एम सेइंग माय एज इज 35 फॉर एग्जांपल। सी यू कैन ड्राइव, इस मीन के जो हमने पहली लॉजिक लगाई थी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 वाली, वो तो बिल्कुल सही चल रही है। अगर हम यहाँ पे वैल्यू डालते हैं नीचे वाली, मतलब कि 17 डालते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कोई डेटा नहीं है, हमने उसके बाद कुछ लिखा ही नहीं है। हम यहाँ पे आते हैं, लिखते फिर एल्स, ठीक है। हमने एल्स करके अपनी कंडीशन सॉल्व करी और एल्स पे हमने लिख दिया कि भाई प्रिंट करो, और यहाँ पे लिख दो यू आर नॉट एलिजिबल और यू कैन ड्राइव, यू कैन नॉट ड्राइव। जो हमारे पास ऊपर का था हम उसी को सिंपल कैन नॉट ड्राइव, उस स्टेटमेंट को हम सेम लेते हैं। अब हम रन करते हैं। अब हमने इसको रन किया। अब हमने यहाँ पे बोला कि भाई मेरी एज है क्या 17, यू कैन नॉट ड्राइव। तो अब यहाँ आपने देखा, आपने समझा कि जो ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्टिव दिया हुआ वो ये समझाने के लिए है कि आपने एंड को कैसे इस्तेमाल किया। तो इस सूरत के अंदर ये दोनों पार्ट हमारे क्या हो गए, ट्रू हो गए। अगर हम इसी पे जाते हैं और एक पार्ट के ऊपर मैं यहाँ पे जाकर और लगा देता हूँ, लेट्स सी, देखो और के ऊपर फिर क्या होगा। हमने और किया तो दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। हमने और किया और यहाँ पे कर दिया 16, सी यू कैन ड्राइव। अब इस सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे कोड को चेंज करना पड़ेगा। कोड को क्या चेंज करना पड़ेगा, कोड को हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा कि भाई यूजर से इनपुट लो, और यूजर से इनपुट लेने के बाद हमें यहाँ पे पूरे कोड को चेंज करना पड़ेगा, जब जाके पार्ट चेंज होगा। यहाँ पे क्योंकि प्रोग्राम हमारा एंड को डिफाइन कर रहा है, तो सिंपली हमारे पास एंड का पार्ट आ गया। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो हमें आउटपुट दिखाएगा, कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो वो हमें आउटपुट दिखाएगा कि भाई आप एलिजिबल नहीं है। 25 हमने एंटर किया तो आ गया यू कैन ड्राइव। गॉट इट एवरीवन? सो दिस कोड इज ऑन योर स्क्रीन, just try to copy the same code and do the practice on your computer and let me know that if you face any difficulty. So अब जो हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे और की फ्लैग्स के साथ कि वो फ्लैग में काम किस तरीके से करता है। जैसे फ्लैग हमने यहाँ पे दिखाया था कि ट्रू की वैल्यू पहले से बताई गई थी। अब हम यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि भाई हम जो बनाएंगे नेशनलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं कि क्या आप ट्रेवल कर सकते हो या नहीं कर सकते, ठीक है। और कंडीशन के साथ है हमारे पास सिंपल एज पासपोर्ट, हमने आपसे पहला पार्ट बना लिया कि भाई हमारा पासपोर्ट है या नहीं है, तो कंडीशन इसकी क्या है, फॉल्स है कि भाई हमारे पास पासपोर्ट नहीं है। सेकंड हमने एक वेरिएबल बनाया जिसपे हमने बोला कि भाई हैज नेशनल, कि आपके नेशनल आइडेंटिफिकेशन कुछ कार्ड है आपके पास या आईडी है आपके पास। हमने बोला यस ट्रू, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ट्रू कर दिया इसको कि भाई हमारे पास एक कंडीशन फॉल्स है और एक कंडीशन हमारे पास क्या है, ट्रू है। तो अब हम इफ हैज पासपोर्ट, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या भाई it has passport, ठीक है, और has national ID, बहुत सिंपल। अब इसमें हमने यूजर से कोई डेटा नहीं लिया, हमने सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू पे काम किया है कि भाई ट्रू क्या है और फॉल्स क्या है। हमने एक साइड को फॉल्स कर दिया और एक साइड क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं भाई प्रिंट, क्या कर दो, यू कैन ट्रेवल, ठीक है। दोनों कंडीशन में से आपने किसी एक कंडीशन को ट्रू करना है तो वहां पर हमारे पास आ जाएगा ये वाला पार्ट। अब हम जाते हैं यहाँ पर रन करते हैं, हमने इसको रन किया, डायरेक्ट हमारे पास आंसर क्या आ गया, यू कैन ट्रेवल। अब आप चाहो तो यूजर से डेटा मांग सकते हो कि आपने यूजर को डेटा, सिर्फ अभी आपको समझाने का मकसद क्या था, ये फ्लैग्स,
कि हमारे पास यहाँ फ्लैग्स हैं, मल्टी कंडीशनल के फ्लैग्स जो होते हैं या ऑपरेटर्स वैल्यूज होती हैं, उसको अपनी प्रोग्रामिंग में कैसे इस्तेमाल करें। हमने पहले बात की थी कि वहां पर एक वैल्यू हमने यूजर से ली थी और दूसरी हमने प्री डिफाइन रखी थी। अब हमने यहाँ पर दोनों को प्री डिफाइन रखा है, ठीक है। हमारा दोनों पार्ट गया यहाँ पर प्री डिफाइन है और सिर्फ हमने फार्मूला लगा दिया। ऐसी सिचुएशन हमारे पास कब आती है, जब हम यहाँ पे फंक्शंस की बात करते हैं, जो कि आगे वाली क्लासेस के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं। Anyone have any query regarding this part, कि why we have to use flag and what is the purpose of the flag and how this particular line number 5 sorry is working with that flags। ठीक है, फ्लैग्स हमारे पास होते हैं प्री डिफाइंड वैल्यूज जो कि हमने यहाँ पर यूज करी और हमने यहाँ पे बात कर दी कि भाई आपके पास डेटा किस तरीके से चलेगा, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज दिस, just have a look on it, then after that I'm just directly going to the next one. Take the screenshot of it. This is an example of OR and flag. See, there's no numerical data taken from the user, no data asked from the user. We just use the flag true and false by using OR. Okay, now we are going to use the third one, not. ठीक है, so not we can very simply use over here. If I use the not over here, let's see what happens. See, you can travel, and if I change it to and, let's see what happens. See, you can travel. If I remove this and, oh sorry, or from here, now see, nothing is there because and means both should be true, ठीक है। Well, this passport has the false value, and if I write it the not over here, not, so it means that whatever the value stored in has passport variable is need to be reversed, ठीक है। If it's false then become true, if it's true then become false, ठीक है। अभी हमारे पास फॉल्स वैल्यू कहां पर लिखी हुई थी, यहां पर लिखी हुई थी, तो हमने यहां पर डेटा कलेक्ट कर लिया। This makes sense for you all? Or anyone want to ask any question regarding this कि हमने यहाँ पर क्या किया। देखो, सबसे पहले हमने जो मैंने कोड लिखा था, ये कोड मैंने लिखा था और के लिए, ठीक है। और का मतलब ये होता है कि दोनों में से कोई भी एक साइड ट्रू होनी चाहिए। तो हैज पासपोर्ट का हमारी जो वैल्यू थी वो फॉल्स थी, और नेशनलिटी जो कार्ड हमारे पास आईडी कार्ड होता है उसके ऊपर हमारी वैल्यू ट्रू थी। तो जब हमने यहाँ पर इसको और के साथ रन किया, ठीक है, तो और के साथ रन करने के ऊपर हमारे पास डेटा बिल्कुल एक्यूरेट आया, बिल्कुल ओके चला, इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अब जब हम इसको चेंज करते हैं, हम यहाँ पर नॉट अप्लाई करते हैं, अगर हमारी वैल्यू नॉट के साथ चल रही है तो नॉट का मतलब क्या होता है, इनवर्स या रिवर्स आप चले जाओ। अब हमने वैल्यू क्या करनी है, चेंज करनी है। अब हमें अपनी प्री डिफाइंड वैल्यू चेंज नहीं करनी है, अब हमने डायरेक्ट चेंज करना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया नॉट, ठीक है। तो नॉट का मतलब दोनों क्या हो गए, ट्रू हो गए, सही है। हमें ऐसे पता नहीं चला कि दोनों ट्रू हो गए जब हमने यहाँ पर एंड लिखा कि भाई हम यहाँ पर एंड करते हैं, तो जैसे ही हमने एंड को रन किया तो यू कैन ट्रेवल हमारे पास लिखा हुआ आ गया, ठीक है। ऑल क्लियर? जस्ट ट्राई ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम। आई एम जस्ट गिविंग यू 2 minutes फॉर दैट, देन आफ्टर द 2 minutes आई विल स्टार्ट माय अदर एग्जांपल। So now we are going to discuss about the combined condition and or versus we can say nested condition. So दोनों सूत्रों के अंदर हमारे पास क्या होगा कि हम एग्जांपल जो अभी यहाँ पे बात करेंगे वो बात करेंगे हम combined conditions and nested conditions। जैसे मैंने पहले बताया था, nested का मतलब एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन। कि पहली कंडीशन आप ये चेक करो कि वो क्या होना चाहिए, 18 होना चाहिए। दूसरी आप ये कंडीशन चेक करो कि दोनों में डिफरेंस क्या, यानी कि दूसरा पार्ट जब जाएगा जब पहला पार्ट क्लियर हो जाएगा। अब इसको हम कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब हमारे पास हम यूजर से डेटा कलेक्ट करेंगे एज,
हमने यहाँ पर ली, हमारे पास हमने इंटीजर वैल्यू रखी, दूसरा हमने इनपुट की स्टेटमेंट लिखी, तीसरा हमने यहाँ पे पार्ट लिखा प्रॉम्प्ट कमांड कि एंटर योर एज। ठीक है, ये अब हमारा पहला पार्ट हो गया। अब क्योंकि हमें वहां पर जेंडर एक्सेप्ट करना है, यूजर से जेंडर की बात करनी है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे जेंडर। ठीक है, अब जेंडर एंट्री करने के लिए हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे यूजर जेंडर। ठीक है, GND, ताकि हमें पता चले कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। यूजर जेंडर की है। यूजर जेंडर हमारे पास किस फॉर्म के अंदर है? स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर है, तो आप इसको SRT, ठीक है, ओपन इनपुट, आप यहाँ पे लो एंटर योर जेंडर, दैट इज फीमेल और मेल। ठीक है, अब हमने उसको मैसेज दिया कि आपने मैसेज की बात की कि आप किसके ऊपर बात कर रहे हो और किस चीज को लेके बात कर रहे हो, तो हमने यहाँ पे किया। सेकंड पार्ट हमारे पास आया, हमने बोला कि भाई इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, कि अगर आपके पास आप 18 से बल्कि 18, अगर आप 18 से बड़े हो तो आप क्या कहलाओगे? अडल्ट कहलाओगे। ठीक है, और अदरवाइज हम उसको क्या बोल देंगे? यू आर नॉट एन अडल्ट। ठीक है, अब साथ में क्योंकि कंबाइन की हम बात कर रहे हैं और हम इसकी बात कर रहे हैं, नेस्टेड की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे पहला पार्ट लिखने के बाद हमने किया क्लोज। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे दूसरा पार्ट लगाया इफ जेंडर, यूजर जेंडर जो हमने वहां पे लिखा था, यूजर जेंडर इक्वल टू होता है किसके? फीमेल के। ठीक है, अगर वो जेंडर दूसरे में होता है तो आपके पास यहाँ पे आया, हमने दूसरा पार्ट लिखा कि वो भाई किसके बराबर हो रहा है? यूजर के बराबर हो रहा है, दूसरी फीमेल के बराबर हो रहा है। तो आपके पास यहाँ पे पार्ट क्लियर हो गया, तो हम यहाँ पे प्रिंट के ऊपर लिखेंगे प्रिंट योर एज एंड जेंडर कैन टेक पार्टिसिपेट और पार्ट इन अपकमिंग इवेंट। अब आपके पास मैसेज पे डिपेंड करता है कि आप क्या मैसेज करवा रहे हो। हम यहाँ पे कर सकते टेक पार्ट इन विमेन इवेंट्स। ठीक है, पार्ट इन ऑल अपकमिंग विमेन्स। ठीक है, अपकमिंग विमेन्स इवेंट्स। ठीक है, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या मैसेज आप दे रहे हो, क्या नहीं दे रहे हो। तो यहां से अब जब हम इसको रन करेंगे तो इट इज गोइंग टू आस्क अस अ डिफरेंट क्वेश्चन, लाइक फॉर एग्जांपल 19 जेंडर इज फीमेल। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे से डेटा काम नहीं किया, क्योंकि हमारे पास कोई डेटा यहाँ पर एलिजिबिलिटीज की नहीं आई, क्योंकि हमने यहाँ पर डेटा सही तरीके से कहीं गड़बड़ कुछ हुई है। स्मॉल कोड होगा या छोटी सी चीज होगी जिसको हमने मिस कर दिया होगा। लेट मी चेक। क्योंकि देखो इसमें इसने सिंटैक्स एरर नहीं दिया, आउटपुट कुछ भी नहीं दिया। सो आउटपुट के ऊपर जो हमारा मैसेज था वो आना चाहिए था। ठीक है, तो वो मैसेज हमारे पास नहीं आया, तो उसकी बेस के ऊपर इसने यहाँ पर हमें गड़बड़ थोड़ी सी करी है। तो अब हमें यहाँ पे सिंटैक्स एरर इसका मैं चेक कर लूँ कि सिंटैक्स एरर में इसने क्या मिस्टेक दी है। ठीक है, पहला पार्ट क्लियर है, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, और ठीक है एज, so I have to explain again. So if I'm going to explain again this thing, so what we did, we are using a combined or nested loop. In the nested loop, we have created a age variable, ठीक है, with the integer, and user gender हमने किया user ताकि उसमें data input करे. If age, this is our primary condition. If this is condition get true, then the program need to read the other one. Otherwise, it's come to over here. अगर ये condition true नहीं होगी तो डायरेक्ट इसको आउटपुट कर देगा। अगर ये ट्रू होगी तो ये इस बीच वाले पार्ट को पढ़ेगा। देखो हमने जो कल प्रैक्टिस की थी, लास्ट क्लास में प्रैक्टिस की थी, उसके अंदर हमने बताया था कि अगर पहली कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो दूसरी पढ़नी है। यहां पर हम उसको दो अलग अलग कंडीशन दे रहे हैं। पहली हमने उसको एज का क्राइटेरिया दिया, दूसरा हमने उसको ये बताया कि फीमेल है। दो अलग अलग ऑब्जेक्टिव में सेम कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो इस चीज को आपने हमेशा याद रखना है कि अगर आपने कंडीशन की बात करनी है
तो क्या एक ऑब्जेक्टिव के ऊपर मल्टीपल से या अलग अलग ऑब्जेक्टिव आपने अप्लाई करने हैं, ठीक है। अगर आपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव अप्लाई करने हैं तो ये वाला पार्ट आपके पास आएगा, ठीक है। गॉट इट? दिस मेक सेंस फॉर एवरीवन? यस केसी?
Part. Last question for today's class. Okay, we are going to create a code for student scholarship eligibility. Okay, the student is eligible for the scholarship or not. क्यों अब ये डेटा, क्योंकि इस डेटा के अंदर हम डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को सर्च करेंगे, हम फ्लडेड इन्फॉर्मेशन भी बात करेंगे, हम नॉर्मल डेटा की भी बात करेंगे. लाइक हमने सबसे पहले बात की CGPA, कॉम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट. ठीक है, आपके पास ये आ जाता है, जिन्होंने यूनिवर्सिटी पढ़ी हुई है उनको बहुत अच्छे से मालूम है CGPA का काम क्या होता है. फ्लड, क्योंकि हमें डेटा जो है वो कलेक्ट करना है हमारा किसके अंदर, डेसिमल वैल्यूज के अंदर. हमने इनपुट ले लिया. इनपुट के बाद हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एंटर योर CGPA, या हम सिर्फ GPA भी कर सकते हैं अगर सेमेस्टर वाइज करनी है. हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं, तो CGPA हो गई हमारे पास. ठीक है, उसके बाद हम उसके कोर्सेज कर सकते हैं या अटेंडेंस की बात कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. हम बोलते हैं यहाँ पर अटेंडेंस को ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल अटेंडेंस है हमारे पास, इनपुट है, न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा, इंटीजर फॉर्म के अंदर है डायरेक्ट. ये इसके अंदर कोई भी दूसरी चीजें आ ही नहीं सकती. इनपुट तो हमने यहाँ पर कर दिया, एंटर अटेंडेंस. ठीक है, परसेंटेज. हमने बात की भाई आप किस में करते हो, अटेंडेंस परसेंटेज के अंदर. हमने यहाँ पे गए हमारी नेक्स्ट पार्ट के अंदर, हमने किया इफ CGPA इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3.4 and attendance is equal to, sorry, greater than or equal to, greater than and equal to 90, then क्या करो, प्रिंट. क्या प्रिंट करना है, you are eligible. ठीक है, you are eligible for स्कॉलरशिप. ठीक है, कि आपके पास, अब हमने क्या कर दिया, एलिजिबिलिटी लगा दी. कि भाई एलिजिबिलिटी में हमने लगा दिया कि आपके पास डेटा किस तरीके से जो है वो एक्यूरेट आएगा. ठीक है, आपके पास डेटा आ गया कि हमने यहाँ पे बता दी कि भाई आपका एलिजिबल है. एल्स क्या प्रिंट कर दो भाई, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप. ठीक है, अब हमारे दो बहुत बेसिक से पार्ट थे जो हमने लिखे. अब हम इसको रन करते हैं. रन CGPA. पहले एक्यूरेट डेटा की बात करते हैं कि जो डेटा हमारा एक्सेप्ट कर ले. 3.5, अटेंडेंस इज 95. See, you are eligible for scholarship. Now we have to go for test data, another boundary data. हम बाउंड्री डेटा की बात करते हैं जिसमें 3.4 हमारे पास आ गया और GPA में 90% आ गया. तो यू आर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. अब हम अपनी बात करेंगे इन नॉर्मल डेटा की, जो डेटा क्या हो, आउट ऑफ रेंज हो, चाहे कोई एक साइड करो. हमने CGPA कर दिया 3.4 और परसेंटेज कर दी 89.9. ठीक है, 89.9 क्यों, क्योंकि 89.9 हमने यहाँ पर दिया ही नहीं था अटेंडेंस परसेंटेज की, सॉरी थी, इसलिए हमारे को ये एरर आया. हम दोबारा करते हैं, सॉरी 3.4 और 89. ठीक है, सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप. इससे पहले जो प्रॉब्लम आई थी उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज करते हैं. हमने इसको कर दिया फ्लड. अभी हमारा प्रोग्राम डेसिमल वैल्यू अटेंडेंस की भी कैलकुलेट करेगा. अब हम करते 3 GPA और परसेंटेज करते 90.1. ठीक है, यू आर नॉट एलिजिबल बिकॉज आपकी परसेंटेज की और द CGPA क्या है, वो एलिजिबल नहीं. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे. ये वाले सवाल के बाद स्क्रीनशॉट ले लो. इससे पहले जो अभी हमने तकरीबन 4-5 क्वेश्चन किए, तो आप देख लेना कि सवाल को कैसे सॉल्व करना है. और अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही हो तो जस्ट शेयर इट. और मोस्टली जो मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर है या जो मैं आपको नोट्स भेजूंगा उसके अंदर इनके कुछ सॉल्यूशंस वगैरह भी होंगे और आप वहां से भी रेफरेंस ले सकते हैं अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप कि यू लाइक द क्लास और यू लर्न न्यू थिंग्स विच यू आर नॉट अवेयर इन, और कैसे कंबाइन करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्स इफ और नेस्टेड इफ. कि हमें एक ऑब्जेक्टिव है तो एल्स इफ इस्तेमाल होगा, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव है तो नेस्टेड इफ हमें इस्तेमाल कैसे करना है. So thank you everyone for joining today's class. See you tomorrow.